preparation of haloarenes. In class 12, generally arenes we take as benzene only. We don't take naphthalene or anthracene. We don't take that. So say if it is benzene, it has a rich pi electron cloud. It has rich pi electron cloud. So by any means, if we can give Cl plus to this chloronium ion, then this rich pi electron will form a pi complex with it. It is an attraction between this positively charged chloronium ion. This chloronium ion is nothing but electrophile. It is an electrophile. Negative charge loving species or electron loving species. It is called as electrophile. So mostly the arenes, they undergo electrophilic substitution reaction. Now, this kind of reaction can become more easy if this pi electron is made more richer. Okay. As of now, this molecule is stable. This molecule is stable and these electron clouds are also stable. But by any reason, by any method, if we can increase the richness or polarity of this pi electron more, then this reaction will take place more easily. So what we can do is we can take iron and a chlorine atom. So it forms FeCl3, and with another chlorine molecule, it forms FeCl4 minus and Cl plus. So in this is how electrophile is generated. Generation of electrophile. Generation of electrophile is done like this. So first factor is that we have to make one electrophile. Second factor is that we have to increase the polarity or increase the richness of the electron here. So to increase the richness of the electron, we can add one plus I group, positive inductive effect giving group. So methyl group is a positive inductive effect giving group. Methyl group is a plus I group. CH3 is a plus I group. Means it has an electron pumping effect. It gives electron pumping effect. This increases the richness of this pi electron more. How? Like this. This bond can come here. This bond will come out. So here no bond resonance. This process is called as no bond resonance. It is also called as Baker-Nathan effect. So it will form a double bond here. One H plus will come out.
one electron pair will be in the ortho position. Next, now this H plus, what is the fate of this H plus? The fate of this H plus is that either it reacts with FeCl4 and forms HCl and FeCl3, or after the resonance completes, it acts as a replacement of the substituent. Let us see how. This comes here. So leaving the meta group, it is coming to para group. Again it comes here. This goes here. And at last it comes here. This goes here. And the H plus which was there comes in equilibrium with this, remains in equilibrium with this also. So what do we see? We see that the negative charge is more prominent in the ortho and para group. So negative charge is more prominent in the ortho and para group and not in the meta group at all. Not in the meta group at all. So if the chloronium ion substitutes any of this carbon atom, then twice of the ortho product will be formed and once the para product will be formed. So in short, we can write that in the ortho position, if methyl group is present, then twice of this molecule will be formed and once para will be formed. So what is the conclusion? Conclusion is that first, benzene ring is electron rich. Second, plus I group makes electron cloud more reactive. Third, plus I group gives ortho para directed compound of halogen in 2:1 ratio. Mitali has a question. She is raising her hand. You can ask. You are raising. सर बाय मिस्टेक हो गया था. अच्छा. ओके. तो अभी बुक में जो दिया हुआ है वो इस प्रकार से दिया हुआ है. यहाँ पे बुक में ये रिएक्शन दिया हुआ है इस प्रकार से. यहाँ पे देखना, ऑर्थो पे एक एक्स लगा हुआ है, पारा पे यहाँ पे पारा है. ये पारा क्यों है? यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऐसे ड्रॉ किया है तो ये पारा ऐसे यहाँ पे दिख रहा है. पारा पोजीशन कैसा होता है? 1,4 पोजीशन होता है. ऑर्थो पोजीशन कैसा होता है? 1,2 पोजीशन होता है. If it is 1,
2, 3, 4. So 1, 4 position is para and 1, 2 position is ऑर्थो. ये 2:1 रेशियो में बनेगा क्योंकि ये प्लस आई ग्रुप है और ये ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग ग्रुप है. ये यहाँ पे इस प्रकार से कुछ एक सेंटेंसेस में एक्सप्लेन करके रखा हुआ है. ठीक है, उसको मैंने डिटेल में बता दिया. Next, we will see how benzene diazonium chloride is formed and how using benzene diazonium chloride haloalkanes are prepared. ये बेंजीन है, ये इलेक्ट्रॉन रिच है. इसमें डाइजोनियम बनाने के लिए या एमीन बनाने के लिए हमारे पास जो उपाय है वो है कि हम इसमें HNO3 और कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 डाल सकते हैं. इसे हम कहते हैं नाइट्रेटिंग मिक्सचर. इसे नाइट्रेटिंग मिक्सचर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये NO2 जनरेट करता है, जनरेट्स E प्लस इक्वल टू NO2 प्लस, मतलब नाइट्रोनियम आयन. जहां प्लस चार्ज रहेगा वहां पे ओनियम लगाते हैं, नाइट्रोनियम आयन. कैसे? ऐसे नाइट्रोजन, अब H2SO4 डालेंगे तो H2SO4 का एक H प्लस आके इसके साथ बॉन्ड बना लेगा. ठीक है, और ये बन जाएगा प्रोटोनेटेड नाइट्रिक एसिड. पहले तो ये नाइट्रिक एसिड था, अब ये H2SO4 के कारण बन गया प्रोटोनेटेड नाइट्रिक एसिड. तो इसको स्टेबल करने के लिए ये बॉन्ड यहां से लेके इसको भाग जाएगा और ये बन जाएगा NO2 प्लस. अब ये इलेक्ट्रॉन रिच है और ये इलेक्ट्रॉन लविंग स्पेसीज है. तो सबसे पहले क्या बनेगा? पाई कॉम्प्लेक्स. पाई कॉम्प्लेक्स मतलब पाई क्लाउड के साथ इलेक्ट्रोफाइल का अटैचमेंट. तो दिस वाज आल्सो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. अब इसमें रेजोनेंस होगा. अब सिग्मा बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा तो रेजोनेंस होगा. तो ये मॉलिक्यूल कुछ ऐसा था. इस मॉलिक्यूल में से अगर ये बॉन्ड का ये इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर आता है और NO2 यहाँ पे ज्वाइन होता है तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा. नेक्स्ट रेजोनेंस स्टेप, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज, ये यहाँ पे, ये NO2. अब ये यहाँ पे सभी कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन है जो दिखता नहीं है. ठीक है, अब ये हाइड्रोजन H प्लस यहाँ पे और ये निकल गया H प्लस. एक मिनट. हाँ, हेलो.
हाँ जी सर। गुड मॉर्निंग सर, बताएं। सर अभी ऑनलाइन क्लास में हूँ थोड़ा सा। हेलो। हाँ, तो एच प्लस निकल जाएगा और ये बन जाएगा NO2। एक बार ये NO2 बन जाए उसके बाद फिर कई सारा कुछ बन सकता है। और क्या क्या बन सकता है? इसको रिड्यूस कर सकते हैं। टीन डाल देंगे और HCl डाल देंगे तो हाइड्रोजन गैस निकलेगा और ये ऑक्सीजन रिड्यूस हो जाएगा। अब इसको डाइजोनियम क्लोराइड बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? इसमें सोडियम नाइट्राइड डालते हैं NaNO2 और HCl। तो ये एक बड़ा अच्छा रिएजेंट बनता है, बहुत काम आता है ये। N2 plus Cl minus, this is called as benzene डाइएजोनियम। डाइएजोनियम, ओनियम इसके लिए प्लस चार्ज है, डाइएजो मतलब 2 नाइट्रोजन क्लोराइड। अब इस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को कई तरह से हम एल्काइल हैलाइड्स में एराइल हैलाइड्स में चेंज कर सकते हैं। पहला मेथड ये है, N2Cl प्लस Cu2X2 डाल दें। Cu2X2, X2 मतलब क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन कुछ भी, तो ये बन जाएगा X। यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हैं। ये जो रिएक्शन है इसे कहते हैं सैंडमेयर रिएक्शन। ठीक है, इसमें HX भी डालते हैं। ये सैंडमेयर रिएक्शन है। एकदम सिमिलर रिएक्शन एक और भी है सिमिलर रिएक्शन है, लेकिन उसका नाम थोड़ा डिफरेंट कर दिया गया है। कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है उसमें। इसमें अगर हम क्यूप्रस क्लोराइड को ना डाल के कॉपर डाल दें और हैलोजन डाल दें कोई भी, ठीक है, और हीट कर दें तो भी यहाँ पे X बन जाएगा। तो ये एक मेथड दिया हुआ है बुक में, ये दूसरा मेथड दिया हुआ है। एक और मेथड है, इसमें अगर हम Ki डाल दें पोटेशियम आयोडाइड तो इसमें आयोडाइड आ जाएगा। और एक होता है एक बाल्ज स्कीमैन रिएक्शन। इसी मॉलिक्यूल में अगर हम NaBF4 डाल दें, NaBF4 इज नथिंग बट NaF प्लस BF3। ठीक है, सोडियम बोरोफ्लोराइड, तो ये
यहाँ पे F आ जाएगा, ठीक है। तो ये था सैंडमेयर रिएक्शन, ये था सैंडमेयर रिएक्शन, ये था गैटरमैन रिएक्शन। ये एक्सटेंडेड एप्लीकेशन है, ठीक है, इसका कोई नेम नहीं है, अलग से नेम नहीं दिया गया। ये एक्सटेंडेड एप्लीकेशन ऑफ गैटरमैन एंड सैंडमेयर रिएक्शन है, और इसका एक नाम है, इसका नाम कहते हैं बाल्स BALTZ स्कीमैन रिएक्शन। तो ये था प्रिपरेशन ऑफ हेलोएरिन्स। अब प्रॉपर्टीज देखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएरिन्स। एरिन्स का जो बेंजीन ग्रुप है उसमें पाई क्लाउड है, और जो हैलाइड्स होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इस प्रकार से। तो एज ए रिजल्ट इट कैन अंडरगो रेजोनेंस, दिस मॉलिक्यूल कैन अंडरगो रेजोनेंस। इसमें रेजोनेंस इफेक्ट दिखेगा हमें। कैसे? ये इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पे आए, ये बाहर आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पे आए तो ये बाहर आ जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पे आए तो ये बाहर आ जाएगा। फिर ये यहाँ पे और ये वहां पे वापस। इस प्रकार से ये मॉलिक्यूल के जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं ये रोटेट करते रहेंगे। तो इस तरह के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं इन्हें कहते हैं कैनोनिकल स्ट्रक्चर। और एक स्ट्रक्चर जो दोनों रेजोनेंस स्ट्रक्चर को, सभी रेजोनेंस स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कर पाए, उसे कहते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। द स्ट्रक्चर विच कैन रिप्रेजेंट all the canonical structure are called as resonance hybrid. तो इसमें हम क्या देखते हैं? इसमें हम देखते हैं कि haloarenes are ortho para directing in nature. Okay, very clearly. Say if I give one chlorine here, one electron here, and if I make it to undergo electrophilic substitution reaction, so 2 times it will form ortho compound, 2 times it will form ortho compound,
and 1 times it will form para compound. So this is also orthoderivative, orthochloronitrobenzene, and this is also orthochloronitrobenzene. This is also ortho product. This is also ortho product. This is para product. So ortho is to para ratio will be 2:1. Okay, so haloarenes are ortho para directing group. So we can write a statement for the property. Haloarenes undergo electrophilic substitution reaction with ortho para directing nature in 2:1 ratio of ortho is to para. Now if I take nitrobenzene, then what will happen? Okay, let us see substitution of nitrobenzene, but that does not come under haloarenes. Now we'll see Friedle-Crafts reaction. Another chemical property is, it is an important chemical property, and also a named reaction, Friedle-Crafts reaction. It is of two types. One is Friedle-Crafts alkylation, another is Friedle-Crafts acylation. Means in one we add CH3 plus or C2H5 plus or R plus, any alkyl group, and in the other, this one we add CH3 CO plus or RCO plus. How do we do it? एक बेंजीन लेते हैं, उसमें अल्काइल हैलाइड लेते हैं, इसमें AlCl3 डालते हैं, तो AlCl4 निकल जाता है और ये पॉजिटिव चार्ज बनता है और ये ऐड हो जाता है. तो पहले पाई कॉम्प्लेक्स, and then resonance will start.
In this way, Friedle-Crafts alkylation can be done. Now, I am giving you the method of Friedle-Crafts acylation. So, if you take CH3COCl, acyl chloride plus AlCl3, then you can form CH3CO. Now, do it in the same method, and you will be able to do Friedle-Crafts acylation also. Okay, so basically these all are electrophiles E plus, which are chloronium ion, NO2 plus ion, CH3 plus ion, CH3CO plus ion. These all are electrophiles and they all undergo electrophilic substitution reaction. Okay, that's it for today.